Hello everyone, welcome to Maths for Sure. Okay, now let's do this sum. Here the question says that two arcs of the same length subtends an angle of 60 degree and 75 degree at the center of the two circles. What is the ratio of the radii of two circles? Now let's understand the meaning of this question. Here the question wants to say that there are two arcs, okay, and that two arcs are of same length which subtend an angle of 60 degree and 75 degree. Okay, what is the ratio of the radii of two circles? तो यहाँ पे हमें जो find out करना है that is nothing but the radius of first circle upon radius of the second circle. That is nothing but the ratio ना. So ratio is nothing but radius of the first circle upon radius of the second circle. Given part में देखिए क्या बोला है, two arcs are of same length. These two arcs are having the same length. They are of same measurement, whereas the theta is 60 and 75. As you all can see here, this 60 is in degree, 75 degree. तो यहाँ पे जो थीटा दिया है वो डिग्री में, but we know that this degree we have to convert to a radian. Now let's begin with the solution. You will see that let the two let यहाँ पे जो हमें बोला है find the ratio of the radii of the two circles. So let the radii of the two circles be r1 and r2, correct? So here we can see that let r1 and r2 be the radii of two given circles, okay, and their arcs of same length as subtends angles of 60 degree and 75 degree at their centers. Okay, now here this r1 is the radius of the first circle, r2 is the radius of the second circle, and whereas in a question they have already specified that arc are of same length ना, so हम लोग ने उसे क्या consider किया as s. Okay, angle subtended at the center of the first circle, that's theta 1, which is 60 degree, correct? This is given now, so we have to convert this degree to a radian. For that we'll multiply this 60 with pi by 180. So here we can write it as 60 into pi by 180, okay, radian, which is nothing but you can easily cancel out this 0 and then 6 ones are, okay, and this is 6 threes are, so the answer is pi by 3 radian, correct, for theta 1. So here you can see that S1, that is nothing but the length of arc of the first circle, which is, okay, just name it as S only, okay, r1 theta 1, that is equals to, let's substitute the value, r1, your r1 will be as it is because since we need to find this r1, whereas theta is already we are having the value as pi by 3 now, so we'll mark it as equation 1. Okay, now here in the same manner we can talk about the second circle, correct? So here we can see that angle subtended at the center of the second circle, that is theta 2, which is equals to 75 degree, that is 75 into pi by 180, just because we have to convert this degree to a radian, correct?
So that is nothing but it's equal to, see here, 15 fives are is 75 na, 15 fives are, and this is 15 twelves are, so 5 pi by 12. So here we have got theta 2 as 5 by 12 radian. Okay, now we'll find out s, that is s is equals to r2 theta 2. So let's substitute the value. R2 will be as it is, because since we need to find the value of this R2, theta 2 we have got it as 5 pi by 12, correct? Let's mark this as an equation number 2. So right now we are having both the equation 1 and 2. So if from 1 and 2 we can say that from 1 and 2, okay, here we can see that since this S and S are of equal measurement, no? So here we can consider this R1 pi by 3, which is equals to this R2 5 pi by 12. Why they are equal? Because already in a question it has been mentioned that two arcs of the same length, correct? So here we are considering this R1 pi by 3 is equals to R2 5 pi by 12. Okay, now here we can easily cancel out this pi from both the side. So here this is R1 by 3 and this is R2, that is 5 by 12. Okay, now we'll keep this R1 as it is. We'll shift this R2 over here, so it will be at denominator. Look here, I have kept this R1 as it is. I'm just shifting this R2 on left hand side, so it will get divide, correct? So this is equals to this 5 by 12 will be as it is. This denominator ka 3 will get shifted over here, so it will get multiplied. 3 ones and 3 fours are. So here the final answer is R1 by R2, which is equals to 5 by 4. So we can easily see that over here. Therefore, the ratio of radii of two circles is 5:4. That's it. Okay, now here the next question is, the area of a circle is 25 pi square centimeter. Okay, find the length of its arc subtending an angle of 144 at the center. Also find the area of the corresponding sector. अब देखिए क्वेश्चन में they are saying that area of the circle as 25 pi square centimeter. So here we can write the given part. Okay, so area of the circle is equals to 25 pi square centimeter. Okay, then we need to find the length of its arc subtending an angle of 144 at the center. That means your theta is given as 144, but we have to convert this degree to a radian, so we'll multiply this 144 by pi by 180, so that it will get converted to a degree, and the answer for this is 4 pi by 5 radian. Okay, now we have got the value of theta. We are having the value of area of the circle as 25 pi square centimeter. Okay, so here we can see that area, but area of circle is pi r square, correct? So here we can write area of circle is 25 pi, which is equals to this formula, that is pi. Okay, we don't have the value of r,
So we'll keep this r square as it is. From both the side, pi will get cancelled. So 25 is equal to r square. That implies r is equals to 5 centimeter, correct? The radius will be in a positive form. So your r will take value as 5 centimeter. We have the value of theta. We are having the value of r. So we can directly apply s is equals to, that's length of arc is equals to r theta. R is 5 and theta is 4 pi by 5, correct? In radian, na? So your 5 will get cancelled. Answer is 4 pi. Okay, so we can see that s is equals to 4 pi. Okay, we have got this. Even this is in centimeter. Okay, so finally we'll mark this as 1 and this as equation number 2. So in a question they were asking us to find the length of its arc. So length of the arc is 4 pi centimeter, na? Therefore length of the arc is 4 pi centimeter. Now the next question is also find the area of the corresponding sector. So we have to find the area of the corresponding sector, correct? So see you, therefore area of the sector, which is equals to half r into s. Okay, so we can substitute the value here. Half r is 5 and s just now we got it as 4 pi now. So the final answer here, it will be, see here, 2 ones are 2 twos are 5 twos are 10 pi. So we can write it as 10 pi. Since we are finding the area, so we'll write it as square centimeter. Okay, just we'll write here the final statement and then we are done with this sum. Therefore area of the corresponding sector is 10 pi square centimeter. Now please understand, in this question they have asked us two things. First one is find the length of its arc. So length of arc का formula है r theta. अगर हम लोग ये पूरे question में देखें, so they haven't provide us r का value. They have just given us theta, but this theta was in degree. So we'll convert this degree to a radian by multiplying 144 by pi by 180. तो जैसे हम लोग का थीटा रेडियन में हो गया, तो अभी हम लोग का नेक्स्ट जो हमें फाइंड आउट करना है दैट इज़ आर. सो आर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर दैट विल मेक द यूज़ ऑफ दिस एरिया ऑफ सर्कल. सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल दैट इज़ पाई आर स्क्वायर. ओके, यहाँ से हम लोग ईजिली आर फाइंड आउट कर पाएंगे. ओके, तो जैसे हमें आर का वैल्यू मिला, थीटा हम लोग का रेडियन में कन्वर्ट हो गया. नाउ वी आर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ आर दैट इज़ आर थीटा, बिकॉज हमें लेंथ ऑफ आर की फाइंड आउट करना था आर थीटा. तो ये वैल्यू सब सब्सटीट्यूट करके हमें लेंथ ऑफ आर्क मिला एस. जैसे हमें लेंथ ऑफ आर्क मिला, देन इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर. सो एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर का फॉर्मूला देखिए, हाफ आर एस. ऑलरेडी हमारे पास रेडियस भी है और एस भी है, सो वी कैन ईजिली सब्सटीट्यूट. ओके, okay, now here the next question is the perimeter of a sector of a circle of area 25 pi square centimeter is 20 centimeter. Find the area of the sector. अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, the perimeter of a sector of a circle of area 25 pi square centimeter. So here we can easily see that दिस 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर ये क्या है हम लोग का? दिस इज़ द एरिया. एरिया ऑफ व्हाट? एरिया ऑफ सर्कल. ओके, बिकॉज हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर रहता है या स्क्वायर मीटर रहेगा, यानी स्क्वायर यूनिट्स रहता है यहाँ पे, करेक्ट है. सो देखिए, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ एरिया. सो दिस इज द एरिया ऑफ अ सर्कल. सो वी कैन राइट योर इन अ सोल्यूशन दैट area of circle is 25 pi square centimeter, correct? This is given. अब नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, is 20 centimeter. This 20 centimeter is nothing but the value of perimeter of a sector. So perimeter of a sector is 20 centimeter. So here we can write it as perimeter, okay,
perimeter of a sector of the circle is equals to 20 centimeter. Even this is given, correct? Okay, next अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर. हियर वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर. ये हमें फाइंड आउट करना है. ओके, लेट्स बिगिन. यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू है, सो लेट्स मेक यूज ऑफ द फॉर्मूला. सिंस एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला हम सबको पता है, बराबर है. तो एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन एज इन अ क्वेश्चन 25 पाई विच इज़ पाई आर स्क्वायर. दोनों तरफ से पाई पाई कट हो गया, तो यहाँ पे हमें देखिए आर स्क्वायर कितना मिला? 5. दैट इज़ नथिंग बट आर इज इक्वल्स टू, सॉरी दिस इज आर स्क्वायर इज 25, सो आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. करेक्ट, बिकॉज जो एरिया है वो सेंटीमीटर में है, तो रेडियस भी यहाँ पे सेंटीमीटर में ही रहेगा. सो जस्ट नाउ वी हैव गॉट द वैल्यू फॉर योर रेडियस. ओके, नाउ we'll make use of this perimeter of a sector of a circle. So we'll see that perimeter of sector का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दैट इज़ 2r प्लस एस. ओके, अब यहाँ पे देखिए 2r प्लस एस लिखा है. r की वैल्यू जस्ट नाउ वी हैव गॉट इट एज 5, करेक्ट, एंड योर द पेरीमीटर इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज़ how much? 20 सेंटीमीटर. सो वी कैन ईजिली फाइंड आउट दिस एस. देखिए यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर. आर की वैल्यू हम लोग ने अभी फाइंड आउट किया, सो वी कैन ईजिली फाइंड आउट दिस एस. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर इज 2r प्लस एस. ओके, तो पेरीमीटर इज 20 विच इज़ 2 इंटू आर इज़ 5 प्लस सेक्टर हमें एस ये फाइंड आउट. ये एस जो है वो हम लोग का लेंथ ऑफ आर के वो हमें फाइंड आउट करना है. एस इज़ नथिंग बट लेंथ ऑफ आर. Okay, so your this will be 20 which is 2 5s are 10 plus s, that is nothing but 20 minus 10 because ये plus 10 इधर आके minus बनेगा is equal to s. therefore s is equals to how much? 10. okay, ये भी क्या हो गया हम लोग का सेंटीमीटर में आ गया, बराबर है. जो लेंथ ऑफ आर्क होता है वो एस से डिनोट होता है, दैट इज 10 centimeter. But the question is to find what? Area of sector. Now we can apply the formula of area of sector. Therefore, area of sector is half into r into s. Remember this formula, area of sector का formula half into r into s. Let's substitute the value. So here half will be as it is. r की जगह we'll make use of this value, that is 5 into s. just now we have got it as 10. so 2 1s are 2 5s are, answer is 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर है. बिकॉज एरिया जो भी होता है वो हमें यूनिट स्क्वायर में लिखना होता है. देयरफॉर फाइनल आंसर इज एरिया ऑफ सेक्टर इज 25 centimeter square. That's it. Okay, here the next question is OPQ is a sector of a circle having the center at O and the radius 15 centimeter. If measure angle POQ is 30 degree, find the area enclosed by the arc PQ and chord PQ. Okay, अब यहाँ पे देखिए, let's understand this statement by a diagram. Okay, so here I am drawing a circle. This is a circle. Okay, now here for this circle this O is the center. Okay, and it's saying that measure angle POQ is equals to 30 degree. So see, OPQ is the sector of a circle having the center at O. Okay, and a radius 15 centimeter if measure angle POQ is 30 degree. See, so this is POQ. This is a sector of a circle with the center angle as 30 degree. Okay, find the area enclosed by the arc PQ and the chord PQ. तो chord भी बोला, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे chord ये ड्रॉ कर लेते हैं. सो दिस PQ इज अ chord. ओके, और ये जो शेडेड रीजन है वो हमें फाइंड आउट करना है, करेक्ट.
find the area enclosed by the arc PQ and a chord PQ. तो ये हमें शेडेड रीजन को यहाँ पे फाइंड आउट करना है. ओके, सो यो वी कैन डू वन कंस्ट्रक्शन. ओके, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं. लेट्स नेम दिस एज एम. ओके, एंड दिस ओ पी और ओ क्यू दोनों भी क्या है, रेडियस, एंड दैट इज ऑफ मेजर 15 सेंटीमीटर. ओके, लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन नाउ. R is equal to, that is radius, which is 15 centimeter, and the angle, that is POQ, which is 30 डिग्री. अब ये डिग्री को हमें रेडियन में करना है, तो हमें पता है 30 को हमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा, सो दैट इट विल गेट कन्वर्ट टू अ रेडियन. दोनों तरफ से 0 0 कट करेंगे, 3 1s एंड 3 6, सो द आंसर इज पाई बाई 6 रेडियन. ओके, तो हमें ये रेडियन में मिल गया एंगल भी. अब हम लोग ने जैसे ड्रॉ किया था वो हम लोग कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखते हैं. ड्रॉ QM परपेंडिकुलर टू द बेस OP. क्लियर है. अब मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये QM को फाइंड आउट करना है. तो ऑफकोर्स ये जो साइड है उसके अपोजिट में एंगल देखिए 30 है ना. सो 30 के लिए आई कैन से दिस इज़ द अपोजिट साइड. देखिए 30 ये है ना, तो 30 का अपोजिट साइड कौन सा है, MQ ना, तो अपोजिट साइड ये है. सो आई मेक यूज़ ऑफ साइन 30 डिग्री, दैट इज़ अपोजिट साइड विच इज़ नथिंग बट QM अपॉन द हाइपोटेनस, दैट इज़ OQ. तो QM हमें नहीं पता कितना है, बट वी नो द वैल्यू ऑफ दिस OQ, that's the radius, which is 50, and sine is nothing but half na, so half is equal to QM by 15. Let's do the cross multiplication. So it is QM which is equals to 15 by 2. देखिए QM उधर ही है, 15 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, so 15 by 2 is nothing but, if you want you can convert this to a point also, decimal form, so it will be 7.5 सेंटीमीटर, या फिर आप ये फ्रैक्शन को वैसे भी रख सकते थे. इज इट क्लियर? नाउ यो फॉर shaded portion indicates the area enclosed by arc PO and chord PQ, which is nothing but area of the shaded portion, which is equal to area of sector OPQ minus area of triangle OPQ. अब मुझे ये शेडेड रीजन फाइंड आउट करना, तो मैं क्या करूँगी, ये पूरा जो सेक्टर है ना OPQ, इधर से मैं ये ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे बराबर ये शेडेड रीजन का वैल्यू मिलेगा. ओके, सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम सबको पता है, दैट इज़ हाफ R square थीटा माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना. सो यहाँ पे हाफ इंटू बेस इज नथिंग बट दिस OP हम लोग का रेडियस ही है, तो उसका वैल्यू है, और हाइट अभी हम लोग ने ढूंढ लिया है, दैट इज़ QM. ओके, सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू यो. सो दैट इज़ हाफ. ओके, रेडियस इज नथिंग बट इट इज़ 15 ना, तो 15 स्क्वायर, थीटा इज pi by 6, half OP is a radius, that is 15 into QM is 7.5 centimeter. ओके, 7.5, बस हमें यूनिट नहीं लिखना है यहाँ पे. नाउ वी हैव टू डू दिस कैलकुलेशन. तो यहाँ पे वी नो दैट 15 का स्क्वायर इज 225, बराबर है 15 स्क्वायर इज 225 अपॉन दिस 12 ना. So this will be half, 15 square is 225 into pi by 6, then there is a minus sign, half this 15, and this 7.5
is nothing but we all know it is equals to 15 by 2 ना, because just now we have calculated. तो मैं जानबूझ के इसे 15 by 2 रख रही हूँ, because we know that 15 into 15 is 225 and even here is also 225, so we can take out the common part as 225, correct? That's the reason I am writing in place of 7.5 as 15 by 2. Okay, just to take out the common thing. Now here this is 225 pi by 2 6 is 12 minus 15 15 is 225 by 2 2 is 4. Okay, so I can easily take out from your, see, आई कैन डू मतलब हमें 225 कॉमन तो लेना है, लेकिन उसके पहले हम लोग एलसीएम को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. ओके, सो दिस विल बी 225 पाई बाई 225. इसे हम लोग यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें तो हम लोग का डिनोमिनेटर कॉमन बन जाएगा 12. ओके, करेक्ट. हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट द डिनोमिनेटर विल बी द कॉमन एज 12. ओके, अब यहाँ से हम लोग इजीली वी कैन टेक आउट 225. ओके, ये कॉमन हम लोग ले सकते हैं, करेक्ट, अलॉन्ग विद दिस 12. सो इन अ ब्रैकेट देयर विल बी पाई माइनस 3, और हमें पता है ये इजीली कैंसिल हो जाएगा 3 के टेबल से, करेक्ट. सो दिस इज 375 and this is 3 4s. So the final answer will be area of the shaded portion, area of the shaded portion is equals to 75 by 4 pi minus 3 square. सेंटीमीटर लिखो या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना. Is it clear? Like, share and subscribe to my channel.